public-private partnership in healthcare in Pakistan. Pakistan is the 5th most populous country in the world with high population density per square kilometer. In Pakistan, health is provided by public, private sector, autonomous body, social security, philanthropic institutions, and armed forces institutions. As per the statistics from 2021, national public sector health infrastructure is comprised of 1276 hospitals, 5,558 BHUs, 736 RHCs, 5802 dispensaries, 780 maternity and child health care centers. And in addition to these, there are 2,66,430 registered doctors, 30,000 registered dentists, and 21,000 registered nurses in these facilities altogether, while we have a bedding capacity of 1,46,000. These are inadequate numbers as the bed capacity and human resources for health is concerned, because we have a very large population, and to cater to their need, we have a very large private health sector. According to some estimates, more than 70% of our population concern private healthcare as outpatient. As far as healthcare management efficiency and efficacy is concerned, all over the world, private sector excel because of freedom of spending and innovation. To get benefit of private sector efficiency and efficacy and need to increase coverage of population, public-private partnership is a tool to bring quality and accessibility to healthcare. Public-private partnership is basically a legal agreement between a public organization and a private sector entity in which both parties have settled to work together in initiating a program, and that each party has a clearly defined role in and say in how the enactment occurs. Post 18th Amendment, health in Pakistan is a provincial subject, and Pakistan's health policy includes PPP. It included PPP, public-private partnership, in 1960, and Punjab has adopted it since 2008. And right now we have more than 100 hospitals which are managed under PPP. So some of our key questions in today's discussion with our panelists would be the best practices and models that can be implemented and are already in implementation in Pakistan through public-private partnership, and their impact on the quality of care and accessibility of healthcare in the country, and the role of health regulatory authorities in management of PPP and management of private sector in general. We will be joined by Dr. Shazia Sobia Aslam Soomro, Parliamentary Secretary for Health, shortly. And we have Dr. Razia Safdar, Head Center for Health and Policy Innovation at SDPI in our panel today. We have Dr. Quaid, Saeed, CEO, Islamabad Health Regulatory Authority, and Dr. Arif, Azad, Public Policy Expert and consultant with UNDP. UNDP, am I right? And we are joined by Dr. Tabinda, Zaman, Public Health Specialist, Mr. Ayyaz, Kiani, who is also a public health professional. And we will have esteemed Dr. Meher Taj Rohani, a senator and a very well-known health professional from Pakistan. We welcome you all on board today. We'll go to Dr. Razia Safdar for the opening remarks first. Thank you, Aisha, for elaborating the purpose of this seminar. So I welcome you all the panelists and the Honorable Madam Meher Taj, Dr. Meher Taj. And I think at this point in time after the floods, this topic was very important to discuss, as the accessibility and the quality of the care which is required is without involving the private sector is for such a big population is, I think it's not possible. So there are different mechanisms of involving the private sector for seeking help, for reaching to the health targets in Pakistan, which is I will just go through the overview of the health system in Pakistan. As numerically, Aisha has already enumerated certain health system, which is, we have mainly the public and private health systems. So according to theoretically, the
Can you start this slide? This is just a short presentation on health systems. Next one. So the health system, according to the WHO health system framework, it consists of the 6 components. That is health service delivery, health workforce, health information system, medical products, and vaccination and technologies, and financing is very important, and the overall the governance or the leadership is very important. And this all covers the access and coverage of the health coverage towards the better improving the health of the population, and responsiveness and social and financial risk protection, and improved efficacy of efficiency. These all, or if the system has all these components, then we can say that this is a perfect, this is a system which can respond to the needs of the population. So as we have said that in the public sector, we have primary, secondary healthcare, primary, secondary and tertiary healthcare, and the specialized healthcare, which includes the teaching hospitals. And at the moment, we are lacking human resource. Like, for example, we don't have sufficient doctors to be placed everywhere for these BHUs or RHCs. And we are also, the bed capacity is very low, which is according to the WHO, according to the international standards, which is also not very adequate. We're much less, and human resource is also this, which is at the nurses. At the moment, we are having 0.45 per thousand population, but it is it is required is 4.5 per thousand population. And also, I think private healthcare system in Pakistan. Next one. Next. This is not working. Hamza, next, please. Yeah. So in Pakistan, we have a large private health system, which is, it's according to the estimates, about 70% or more OPD coverage is through the private health sector. And pharmaceutical sector is particularly all predominantly in private. And the large number of private teaching institutions in Pakistan, more than public institutions, and they also contribute towards the public health. And with the public partnership with the public and public sector is by the private sectors by the teaching institutions, as well as by the private hospitals for the public for the service. Health service delivery. And they are, since this is a provincial subject now, with the presence of the health regulatory authorities, and health regulatory authorities and the health commissions, I think this sector is also under some regulations, and previously it used to be. I will go briefly through the global health systems. Healthcare systems, which are 4 types of, mainly broadly speaking, where that is beverage model first, which is, for example, it is NHS, and in this it is all it's covered by the government totally, and it is by the taxpayer. Financing is through the taxpayers' money, and it is. But there is some criticism on this system, that there is overutilization or the misuse of this health system, because the user has to pay anything. And the second one is the Bismarck model, which is it is contributory, and all the employed persons or they pay for the health. And in Pakistan, if we compare it with, this is like
social security institutions or some other corporate sector systems which pays the health for the health. But this is this does not cover all the people who are unemployed or who cannot pay. So this system, and third one is the national health insurance model, which is combination of both the Bismarck and other system, which is a beverage system, which is I think it's the private health. It is health is financed by the government, but the provider is by the private providers. So it is the infrastructure is built by the government, and some of the Pakistan's national health insurance is on working on this model, and social health insurance is working on this model. And the third is out-of-pocket payment. The patient or the population pays from the out-of-pocket, and they buy their health products through the payment. And obviously, this is like the more you pay, more you get the health. So this is this is against the SDG agenda of leaving no one behind and all. So the purpose of this, broadly speaking, the objectives of this seminar are to explore the best practices and what are the models of the public-private partnership implemented in Pakistan, and what is the impact of the public-private partnership on quality of care and the accessibility of healthcare. That is the most important, and I think the evaluations, all the evaluations are also on the quality and access of this healthcare system. And role of health regulatory authorities in management of public-private partnership and the management of private sector in general. So we are in, I think it's last 5 years, the healthcare commissions in 3 provinces and the health regulatory authority for the last 2 years or 1.5 years, I think it is active in Islamabad. So we would ask what is the impact on the of that, and what will be the future of the healthcare in presence of universal Sehat Sahulat program and responsiveness to the natural disasters like floods or the COVID-19 we have passed through. So we have learned some lessons. So we will discuss all these. And hopefully, I think we could be able to present something which is, after this discussion, which will be helpful for the government to bring it in the next policy, or as we say, this is the election year, maybe it can be the part of the manifesto of some parties. Thank you. Thank you, Dr. Razia. As we have already mentioned, Pakistan's private sector basically catered to the needs of 70% of Pakistan's population. And that sector is largely unregulated. But now with the presence of healthcare commissions and Islamabad Health Regulatory Authority, there are some SOPs which are followed. But we do not see a measurable change in the access and quality of healthcare. So I'll go to Dr. Quaid Saeed with a question that what is the IHRA's strategy to implement regulations in the private sector? Thank you very much, first of all, for inviting me to this very important session. I think if we look at the health sector of Pakistan, we are looking at so many problems in the health system. The biggest problem that we foresee is actually the financing. We are not financing our health system from the government side. But then whatever we are financing, the implementation problems are very high. So what I see is that in Islamabad, particularly where I am working, most of the people, they prefer to go to the private sector. So if you look at the patient load, although PIMS is full of patients, we have even 2 or 3 patients on a bed. But if you give them a choice, they will never go to a public sector hospital. So what is the reason why people don't want to go to the public sector hospital? And I think the main reason is the quality of care over there. The quality of care in the public sector hospital is below average, while
quality is much higher in the private sector hospitals. Now, for a health regulatory authority like Islamabad Healthcare Regulatory Authority, we are mandated through an Act of Parliament. This is 2018 Act of Parliament, where Islamabad Healthcare Regulatory Authority was established. And under this law, we are supposed to regulate health sector of Islamabad by developing standards. So we develop standards, and then we try to inform people on those standards, and we try to train even healthcare providers on how to achieve those standards. The second important thing is that we register all healthcare facilities and professional Islamabads into our registry. And then after that, there's the next phase where we give them licenses to operate or not to operate. For licensing, we have to gauge a health facility and its operations with our standards. So we try to gauge what is available in those health facilities compared to our standards. And if they are above 90% of our standards, then we grant them a license for a year to operate. Or if we don't grant them a license, they are not eligible to perform services in Islamabad. And that's the case in all the healthcare commissions in the provinces. That's how we all function. So we develop standards, we gauge facilities and their functions on those standards, we grant them license, and then we continue monitoring their quality of care every year to renew their licenses. That's the main. The other important thing is that the healthcare commission and the authority, they are there to safeguard the interests of the end user, the patients. So if they go to a facility and face malpractice, negligence, leading to morbidity or mortality, whatever the outcome is, they can lodge a complaint with our authority or the commissions in the provinces. And then we, after thorough investigations, we can penalize the healthcare facilities based on malpractice or maladministration, whatever they have done, we can do that. And we can stop them from functioning, or we can seal those facilities. We have the authority there. So complaint management is another very important area where these authorities are functioning. The third important thing is the menace of quackery, which is everywhere in Pakistan. Now, these healthcare commissions and the authority is supposed to eliminate quackery from wherever we are working. But I think we should understand that why is quackery so rampant in our population? The reason is that the health facilities or the healthcare of Pakistan is not reaching out to their populations, number one. So reach is not there. Number two, quality of care is very poor. It's not responsive. So people are left with no other choice than to go to the quacks. And that's why quacks are there and flourishing, even in Islamabad. So we have thousands of quacks in periphery of Islamabad, even in the sectors, who are dealing with the patients on every day. We go there, we stop them, we seal their facilities, and in next 1 week, they open a facility somewhere around the same place, and they start functioning, and still the patients are coming. So there are two major problems when we are dealing with quacks. Number one, our health system is not there. The quality of care is very poor. The private sector is not going to those areas where we have quacks working. So private sector is not there. Now, they are left with no other option than to go to the quacks. The second thing is the trust. What we see is that in those areas where we have lots of quacks, and this is periphery of Islamabad, the trust of the people on the public health facilities like BHU is supposed to be working on those areas, or RSCs in those areas, they are not going there to seek treatment. And there are multiple problems. So absenteeism is one, site selection is another, quality of care is another, medicines, availability of medicines and basic facilities like, labs is not there. Some of them have
no toilets. So there are a lot of other things why they have lost trust. But they have lost trust. So then they are not going to abuse it. So what is happening in our BHUs and RSCs? The turnover is very low. Very few patients are going to our basic health units and rural health centers, and they are all going either to the Quads or our private sector hospitals. So you look at the private sector hospitals, they are full of patients. They don't have even beds available for emergency patients. But then you have another very important area that everybody, instead of going to BHU and RSCs, are going to the PIMS hospital as well. So you go there, you have thousands of patients. PIMS has more than 8,000 patients per day in the OPDs. So everybody, instead of going from these lower level facilities, the first level care, the second level care, they are bypassing this and they are going straight to the third level care. So that's another huge problem. The reason is that our primary and secondary care facilities are not functioning and they don't have quality care over there. So we have so many multiple problems. Now, for a healthcare regulatory authority, the problem is that we try to enforce our standards in the private sector very well and in the labs as well. We have a problem with the public sector hospitals. How to implement our authority on public sector hospitals? Should we seal them? Should we stop them from functioning? And what will happen to the patients who have no other choice? They are very poor. They cannot afford private sector. Where should be they going? So we are in a fix when we try to implement our authority based on our standards in the public sector hospitals. So what we do is that we try our best with the public sector, that we try to improve their services. Now that's another debate why public sector hospitals are not functioning. That's another debate because there are a lot of other problems over there. Resources is one, governance over there is another, financing is another area, then corruption, inefficiencies, lots of things in those public sector hospitals that they are not as efficient as compared to a private sector hospital in the vicinity of the same hospital. So I give you an example. If you go to the PIMS hospital, most of the patients, when the doctor advised them a test from a laboratory, the doctors themselves ask them to go out and get this tested from a private laboratory, although they know that they have a laboratory in PIMS, but they have lost their trust on their own laboratory. So most of our patients are actually going to the private sector laboratories. So why are we maintaining a full-fledged laboratory in PIMS hospital? This is just an example. This is happening in Polyclinic hospital as well. So what I believe is that the government should now realize, and they have already realized in provinces and even in the federal area, that slowly and gradually government should not be doing everything. They should not. They are the donors. They are the donors. They have the money, but they are the donors. They are the implementers, and they are the monitors. They are everything, and that's why they can't manage things. So my suggestion would be that we look at the public-private partnerships everywhere in the country. I think KPK province was the first one in 90s and 2000s when they applied this PPP model in their province. Then SIN, PPHI and other lot of organizations, HANS, MRF and so many organizations are working. Indus Hospital is a good example where PPP model is functioning very well. Then Punjab adopted the same model. Even Balochistan have public-private partnerships. And I think this is the right time that we decide that the government shouldn't be doing everything. They should be developing policies. They should be developing strategies. They are the major donor. They are the only donors, but they should not be the implementers. And they should not be the monitors. There should be a third-party monitoring system that can be established. So in general, for a healthcare regulatory authority, we have the standards and we have the powers and we have the mandate to regulate, but we are in a fix when we come to the public sector hospitals. Although things have really changed in 1.5 years in Islamabad private sector hospitals and the private sector laboratories in Islamabad, they have really improved their standards, and we have done lots of complaint management and we have taken lots of actions against private sector hospitals. But we have a problem with the public sector hospitals where we think that, there are things which are beyond their control, and stopping them from function
functioning could be harmful for the patients. I'll stop here, but then we can continue with the discussions. Thank you, Dr. Quaid. And while you were sharing some very interesting insights, I realize we have a very heartening scenario right now. Usually when we have our seminars, it's usually a panel where we are trying to make a gender balance. But right now we have 4 female doctors on our panel, 4 healthcare professionals, 2 of whom are legislators, and one from the upper house of the parliament and another from the lower house of the parliament. And it's very heartening for me today. I am hoping Dr. Sobia, Dr. Shazia would be with us for the entirety of the seminar. So I'll be a little biased in favor of my gender and let them have the last say and come to Dr. Ayyaz first. Dr. Arif. Dr. Arif, you have also authored a book, Patient Pakistan, on about the healthcare system, reforming and fixing healthcare for all. We have one example of an effort that was made for reforming the health system in KP, the MTI. And though it is working well in KP, but there were a lot of protests and there was a lot of backlash for the system as well. It's said to be a classic example of public-private partnership, but it is also a slippery slope. Particularly when the unvoiced purpose of the act is to reduce government spending on health. What are your insights on the model? Yes, thank you very much for. Yes, thank you very much for inviting me. And I think this is one of the rare events where all health professionals have gathered to discuss state of the nation health, and I very much welcome this opportunity. I will answer your question in a little bit, but let me go to mechanisms for improving access and quality, which is very at the core of today's discussion. I think in terms of improving access, there are 2-3 models which Dr. Razia very ably elucidated. And first model is NHS model and Beveridge model. And at the core of that model, there are 3 principles. That state is responsible for the health of the nation. And there state is not a donor. I would just yes, because state has the responsibility to deliver health to its people. And that is the NHS principle, that it will be free at the point of entry, and it will be tax funded. It will not be contributory, and it is available to everyone when he or she needs it. So that is the NHS principle. And that is being replicated across Europe. Yes, the second model is Bismarck, which is contributory model, that government pays a part of it, and employers pay a part of it, and some of the money is paid by employees, and also state also pays a bit. So you improve access 3-4 mechanisms, and that is the second way. Yes, the third model is US, which is entirely insurance-based. And it is, mostly private insurance. That, the rich people get insurance, and they go to private hospitals, and they are treated. And if you look at expenditures in the US, that is highest in the world. I think it is, 6,000-7,000 per person. While UK is about 700-800, and the Europe's average is about 1,000. But the government also covers some of the most vulnerable people. Medicaid is there, and the elderly, and the people who can't afford, they are plugged by the government, that funding ban. And if you look at Obamacare was about extending insurance to the uninsured.
And as a result of Obamacare, about 28 million people were brought into healthcare. Although still about the same number is out of the health coverage. So that is basically three models and others. Now coming to Pakistan. I think in Pakistan, recently, and we must acknowledge that, private sector has been very instrumental over the years. And we can't ignore, this fact. And this is because, state funding for health has always been low. And government has not taken, responsibility for providing healthcare to all the people. So as a result of, this insurance and, a universal health coverage debate, government has introduced insurance. But even before insurance, I will just discuss bit insurance, then I will come to, private-public partnership, how it has evolved. And this government, brought in insurance, say at Sahulat card, and it was before it was introduced under Nawaz Sharif, the earlier on. Prime Minister National Health Program. Yes, Prime Minister. And now, although insurance should always be means tested, but lately they have universalized it, and that is where the problem of it sustainability of it concerns. If you are following the news, there was news yesterday that federal government has stopped 400 billion trash and others. And giving everybody about 10,000 on a card, that has also different issues to which I will come back to it. About private-public partnership, the first experiment was in KP, in which some health centers were given over to the private sector to run it. And at some point, NGOs were also tapped. And there are, evaluations on it, with mixed results. Yes, some improvement was seen, but yes, you can debate whether it is, yes, this is the road, to go down to. I will just highlight 4 or 5 issues, in relation to debate about universal health coverage and insurance, related. Yes, the way this, universal health coverage in debate in Pakistan is being driven, it is, through insurance. And insurance is being seen as a means to achieve it. And through insurance, private sector is being involved in a, big way. And if you talk to policymakers, and of course, Dr. Quaid has just, highlighted that public sector is not performing well, so maybe we should, downscale it. This is the kind of, debate we are seeing in England as well. That NHS is not fit for the purpose, and we should, find other ways. I have my own very, strong take on it, but I won't go into that for just for academic, purposes. Yes, the first issue is its, sustainability. That 10 lakh per persons over a number of years, it is, I think, unsustainable for a government. And had government put that money into developing public sectors, we would have put the system on a more, in stable basis. So I think the long term, as yesterday's news came through, we can see, there will be problems in, in sustaining this level of investment.
Second thing, yes, the way it is being funded right now, it will end up, strengthening, private sector at the expense of the state sector. And I think eroding, state sector with taxpayers' money is not a good omen, or it is not the route to, travel upon. Also, through this system, tertiary healthcare is being, strengthened. And, primary healthcare is being ignored or, neglected. And in all, debates of universal health coverage, primary care is at the center of it. You can't achieve universal health care unless you pour money into, primary health systems. So, that is other problem, the way it is playing. Third, yes, weak regulations. And I will give you examples, and there are, examples in the press as well. If you go to impaneled hospital, and if they know you have, 10 lakh in your pocket, or, you can access that, it is most likely you will be overtreated. It is most likely, and of course, cesarean sections and other, we have the research and all others. So what will happen after 10 lakhs? If you are overtreated, if you go through 2 operations, and your money finishes, what will happen for the rest of your life? And I think these are the issues which are already happening. Some money is being tapped from, Benazir income, in sport programs. And so, that is the third issue. Unless, regulation is very strong, and, private sector is not trained in, and there are not many, standards of, service. And there are no, consumer rights or the better complaint system and to act on them. This kind of abuse is going to happen. And, the last of all, in this debate, emphasis on, public health is entirely lacking. It is, far better to put some money in, in public health and of course improve, preventive side of the things rather than expensive, tertiary, curative, emphasis, which we can't afford. I will just, stop here, and I would rather debate on the issues I have. Yes, and thank you very much. Thank you, Dr. Arif. I would now want to take Dr. Tabinda Zaman, who is a public health specialist. Dr. Tabinda, you have worked with a PPP operated facility, I'm told. Do you think the formula brought improvement in quality of care, technically and clinically, and increase the capacity of human resources for health? Thank you very much for inviting me and for discussion in this very close to my heart topic, the public-private partnership. So why public-private partnership? The panelists before me highlighted the issues of the public system. We have double burden of disease, communicable diseases burden. Now there is emerging burdens of non-communicable diseases. There are MNCH indicators. We are very fall behind our regional countries. So issues are there. Public sector alone cannot provide services to whole of the population. There are issues of coverage, there is issue of accessibility, there is the issue of human resources, there are issues of quality. Luckily, Pakistan has a huge private sector, 70% jaise aapne quote kiya, goes to the private sector for services. Why private sector? There must be something in it. Private sector is there. It is accessible. It is available.
हम जो मर्जी कहें, ठीक है, आप किसी भी सरकारी अस्पताल के साथ चले जाएं, वहाँ उसके इर्द गिर्द नजर घुमाएं, वहाँ पे आपको एक मशरूम ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स और लेबोरेटरीज और क्लिनिक्स नजर आएंगे. So there is something wrong in our system. We are not providing the required services. As public private sector is there, they are providing the services and the perceived quality. When we say quality, the perceived quality of private sector is very good. The masses go there on health-seeking behavior. If any one of us is to seek the health services, we all will prefer to go to the private sector. Everybody in this room, his or her choice will be private sector in case of emergency or otherwise. So we have this opportunity to link private sector for the issues which the public sector is facing. There's an issue of coverage, there's an issue of human resources, there's an issue of infrastructure. So I have worked for over a decade in a public-private partnership. So based on the experience of working in a public-private partnership, what makes it work, what are the impediments, what are the lessons learned. So if the common objectives and there is a margin on the both sides, if that is good, it's a very good opportunity, because the private sector will have the mandate of the public sector. They will get the licenses and licensing and everything in a very quick fix. They will be recognized by the PMDC or other health regulatory forums, and they have the margin of the leverage of the infrastructure. Then the other is the governance. The governance and efficiency in the private sector we ought to learn from the private sector how to provide services efficiently in the public sector. As Dr. Razia has mentioned, the WHO model for health system, the intermediate indicators of the coverage, accessibility, and quality of healthcare. These are very much addressed in the private sector as compared to the public sector. So if we have to provide a good example of public-private partnership, there are certain things we have to account for. As I mentioned, there is the issue of common objective, coalition building, governance. The most important is the involvement of all the relevant stakeholders. All the relevant stakeholders, if you lobby and build a coalition with the relevant stakeholder, patient is also a stakeholder. They are going to utilize those services which are being provided by the public-private partnership. Then again, the legal framework. If the legal framework is good, then the infrastructure and the foundation for the public-private partnership is good, and it is going to be fruitful. But if the legal modalities and legal framework is not there, it will be effective in the policy level as well as the operational level. Being a facility manager, we face daily problems at the implementation level of the public-private partnership models. If these are addressed at the central and the policy level, these problems could be addressed. There are, as in the questions you have asked, which is the best model? There is no quick fix, not a single best model. We have to see what are our challenges, as my panelists before me highlighted. The coverage is the issue. Quality is another issue. Accessibility and availability is another issue. If we keep in mind these issues, then we build our partnerships for the better health outcomes, then we would be in a better position for good examples of public-private partnerships. KP has very good examples of public-private partnership in which private medical college and the district health management work together
for the better health outcomes of the community. It has been quoted in many international journals. At the end of my session, even if we increase only the coverage of the existing intervention in the public sector, कुछ भी मत करें, सिर्फ coverage को बढ़ा दें, तो आप 60% health indicators improve कर देंगे. This is in the Lancet Child Health Survival Series. So we don't need innovations or new models. We have to work on the implementation strategies. We have to work on the legal frameworks for better public-private partnership. Thank you. Thank you, ma'am. Before or if you would allow me, Dr. Taj, I have a question for Dr. Sobia, so if I can take her first. With the current economic situation of the country, we are facing issues with import of surgical equipment and important health supplies. Recently, we heard of suspension of the universal health coverage in Punjab, I believe. It's for Punjab only right now. How does the government aim to meet the demands of the sector amid the damages done by the calamities like floods and with the economic situation of the country? And because there is a lot of lashback of the suspension of the health coverage. How do you aim to deal with this? I think I can respond in national language because national issue. I think कि सबसे पहली चीज जो है ना उसमें आपका बिल पावर जो है वो होना चाहिए. हमारी जो पॉलिसीज हैं ये मैं नहीं कहूंगी कि ब्लेम गेम पे हम नहीं इस चीज को छोड़ेंगे, लेकिन ना ही मैं इसको पॉलिटिसाइज करूंगी. मैं सिर्फ ये बात करना चाहूंगी कि जो हमारे साथ प्रीवियसली सिचुएशन या प्रीवियसली IMF का बिहेवियर रहा है उसको सामने रखते हुए हमें उन्होंने इस तरह से पॉलिसीज में बाउंड कर दिया है कि हमें ना चाहते हुए भी उनकी बहुत सारी चीजों को जो हम नहीं करना चाहते हैं लेकिन वो क्रिटिकल डिसीजंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक हम वो नहीं लेंगे हम अपनी जो सारी चीजें हैं आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे मुल्क से खत्म होती जाएंगी और हम कुछ नहीं कर सकते. आई थिंक इकोनॉमी को बेटर करने के लिए हमें क्रिटिकल डिसीजंस लेने होंगे और जो हमारे पोर्ट पे सारी चीजें पड़ी हुई हैं लेकिन बिकॉज ऑफ LCs, बिकॉज ऑफ हाई वैल्यू ऑफ डॉलर्स हम उन LCs को खोल नहीं पा रहे. तो जब हम ये डिसीजन लेंगे तो आई होप कि ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल होंगी. तो उसके लिए हमें जो अभी बात हो रही थी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की उसकी बहुत जरूरत है क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं और मैं समझती हूँ कि इसमें हमें जो हमारे लास्ट टाइम भी मैंने जब आप लोगों के साथ एक पॉलिसी डिस्कशन की थी तो उसमें मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप जरूर बिठाएं. इनमें ये सारी जो सिचुएशन है इसमें सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर हमारा है वो है ड्रैप. अगर हम यहाँ पे ड्रैप को बिठाते तो मेरे ख्याल में ये वाले क्वेश्चन का आंसर जो है वो बेटर वो दे सकते थे कि उनके पास ये सारी डिटेल्स होती हैं, सारा डेटा होता है कि हमारे पास हमारी जो लोकल जो हमारी कंपनीज हैं वो कितना हमारे पास मटेरियल उनके पास है, रॉ मटेरियल, और कितने दिन हम और इस चीज को लेके जा सकते हैं. तो मेरे ख्याल में ये हमें ट्रैप से ब्रीफिंग लेनी होगी और उसके बाद ही की तरफ जा सकते हैं. लेकिन फिलहाल हम अभी अपनी तरफ से जो जितने भी चीजें हैं मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि कहीं पे भी किसी पेशेंट को या किसी भी जगह पे चाहे वो फ्लड एरियाज हो या जो डिस्प्लेसमेंट हुई है लोगों की वहां पे किसी भी तरह से लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो और हम उनको वो फैसिलिटीज चाहे वो पब्लिक सेक्टर फैसिलिटीज हो या प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटीज हो हम उनको प्रोवाइड करें. अब जब बात हो रही थी तो मैं अभी सर गाइस सब चले गए तो मैं ये बात करना चाहूंगी कि पब्लिक सेक्टर
की जो प्रॉब्लम्स हैं वो तभी होती हैं जब हम फोकस हो जाते हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ, हम प्रायोरिटी देना शुरू करते हैं प्राइवेट सेक्टर को. That is the downfall of the public sector. मैं समझती हूँ कि इस चीज में सिंध गवर्नमेंट को मैं अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने जितना फैसिलिटेट किया प्राइवेट सेक्टर को उससे ज्यादा फैसिलिटेट किया पब्लिक सेक्टर को, जिसमें मैं आपको 2-3 नाम सिर्फ गिनवाऊंगी हॉस्पिटल्स के. इंडस हॉस्पिटल का तो आपने खुद ही कहा था, लेकिन मैं SIUT का नाम लेना चाहूंगी. SIUT वो हॉस्पिटल है जिसमें वो स्टार्ट तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हुआ था, लेकिन अब उसमें लिवर ट्रांसप्लांट का भी यूनिट है. उसी हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का पूरा एक यूनिट बना हुआ है. वो वाहिद हॉस्पिटल है जहां पे आपके ऑन्कोलॉजी जो कैंसर की ट्रीटमेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट होती है. और आपको पता है कि एक सिटिंग जो कैंसर की है वो more than 1 लाख के एक्सपेंसेस आते हैं. तो SIUT वो हॉस्पिटल है जहां पे आपकी ऑन्कोलॉजी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है. और वही उसका ही एक कैंपस जो है, पहले वो कराची में था क्योंकि वहां पे ना सिर्फ सिंध के लोग आते थे बल्कि पंजाब से, बलूचिस्तान से, KP से, हर तरह से लोग आते थे. तो उसका एक हमने कैंपस सक्खर में बनाया है और वो भी फुली फर्निश्ड है. और वहां पे भी साउथ पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध के जो अपर सिंध के एरियाज हैं वो सारे कवर होते हैं SIUT में. और उसके बाद सबसे बड़ा मॉडल है NICVD. मेन हॉस्पिटल है कराची में और फुली फर्निश्ड और हर चीज वहां पे विदाउट एनी कॉस्ट होती है. इवन के बाईपास हो, स्टंट लगने हो, कोई भी चीज हो, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, सब चीजें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं. देखिए, आप जब पब्लिक सेक्टर को इम्पोर्टेंट देंगे, प्रायोरिटी पे रखेंगे, तो मेरे ख्याल में अब बड़े बड़े लोग जो हैं वो आगा खान, लियाकत नेशनल और ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल को छोड़ के NICVD में आके ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं क्योंकि वो चीजें क्वालिटी बेस्ड भी होती हैं और उसके अलावा वो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती हैं. और दूसरी बात यह है कि वहां से ही आप देखें कि सिंध में एक और बहुत बड़ा लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, कॉक्लियर ट्रांसप्लांट का हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट है. कॉक्लियर ट्रांसप्लांट का जो एक्सपेंसेस है वो more than 4 लाख है एक साइड का, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है. गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ये खैरपुर में के करीब है. तो देखिए, हमने इन चीजों को सपोर्ट किया है. और उसके अलावा डाउ यूनिवर्सिटी की जो लैब है, डाउ लैब जो है, उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट सारी स्क्रीनिंग जो है वो कर रहे हैं. इसके अलावा अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो बीइंग अ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ, मैंने खुद विजिट किए हैं पिम्स हॉस्पिटल एंड पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में. अक्टूबर हमने मंथ ऑफ ब्रेस्ट कैंसर सेलिब्रेट किया था, तो उसमें हमने ओपनिंग की थी. पॉलीक्लिनिक में पूरे ब्रेस्ट कैंसर यूनिट के लिए मेमोग्राम, अल्ट्रासाउंड और FNAC जो भी, और उसके अलावा पिम्स में भी पूरा स्क्रीनिंग सेंटर बना हुआ है. तो ये चीजें ऐसी हैं कि जब हम उनको हाईलाइट नहीं करेंगे वो पब्लिक सेक्टर में लोग जाना नहीं चाहेंगे. हम अवेयरनेस देंगे तो ही वो चीजें आगे जाएंगी. अब बात हो रही थी कि सेहत सहूलत कार्ड की, तो मैं समझती हूँ कि ये वो वाहिद प्रोग्राम है जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ स्टार्ट हुआ था वसीला सेहत के नाम से, जो अभी फिर वो हेल्थ कार्ड के साथ वो चलता रहा. ये मैं समझती हूँ कि वो प्रोग्राम्स हैं जो कोई भी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, नाम चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो रहते पब्लिक की फैसिलिटी के लिए हैं. तो उसमें आप देखें कि हमने इस गवर्नमेंट में हमने सेहत सहूलत कार्ड को खत्म नहीं किया है, बल्कि ये किया है कि आपका CNIC जो है वो आपका सेहत सहूलत कार्ड है. आपको स्पेशली कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है. आप उसमें क्योंकि GB पूरा कवर है, ICT पूरा कवर है, KP, पंजाब, AJK. आपका CNIC अगर इन एरियाज का है तो आप किसी भी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करा सकते हैं, इंश्योर्ड है. इवन के उस कार्ड पे आपकी जो ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट या किसी भी कैंसर की ट्रीटमेंट भी अगर आपके कार्ड से उसका लिमिट क्रॉस हो जाती है तो वो
अपग्रेड हो जाता है कार्ड। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन हम एक मेंटलिटी होती है ना कि वही डॉक्टर्स होते हैं जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में बैठ रहे होते हैं और वही डॉक्टर्स होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में बैठ रहे होते हैं। जब लोग सेटिस्फाइड होते हैं जब वो फीस पे करते हैं, फीस पे करके हमको खुशी मिलती है, हमको तसल्ली होती है कि अब हमें सही देखा गया है, लेकिन वो कंपैरिजन नहीं कर पाते कि यही डॉक्टर अगर हमें पब्लिक सेक्टर में देखेगा तो क्या वो सही देखेगा, नहीं देखेगा। ये हमारी सोच है। अगर हमने अवेयरनेस के साथ लोगों की सोच को चेंज करना है तो ही हम कोई चेंज ला सकते हैं। अदरवाइज ये राउंड टेबल, सेमिनार्स, डिस्कशन, ये कुछ भी इसका वो नहीं है। आप ये समझ लें कि हम लोग बात करके चले जाएंगे, लेकिन जब तक वो चीज इम्प्लीमेंट नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पे अगर सब लोग बैठे हैं तो हमारी बात उन लोगों तक जानी चाहिए जिनके लिए हम बात कर रहे हैं। हम MCH के लिए बात कर रहे हैं, मदर चाइल्ड हेल्थ के लिए बात कर रहे हैं, हम उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जो आजकल हमारी, मैं समझती हूँ कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है मेंटल हेल्थ। जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखें कि हमारी हार्ट डिजीजेस बढ़ रही हैं, हमारे डायबिटीज बढ़ रहा है, हमारे स्ट्रोक के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो डायबिटिक होते जा रहे हैं। ये रीजन है सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस ना होने का। हमारे बच्चे इंस्टीट्यूशंस में ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, और उनके ऊपर इतनी सारे होते हैं चीजें। लेकिन हम फोकस अभी करना है हमें कि हमने अपनी हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव कैसे करना है। मैडम ने सही बात की कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये चीजें तभी इम्प्लीमेंट होंगी जब हम अपनी सोच बदलेंगे। सोच बदलने के लिए हमें ये कैंपेन ग्रॉस रूट पे जाके करनी होगी। आप लोग एक पॉलिसी लाएं, बीइंग अ पॉलिसी मेकर हम उसको ऑन करेंगे, हम उस चीज को लेके आगे जाएंगे। मैं वीकली या मंथली में जाती हूँ अपने एरिया में, जाके वहां पे हॉस्पिटल के विजिट भी करती हूँ, BHU के विजिट भी करती हूँ। ये सारी चीजें आपको उन लोगों के प्रॉब्लम्स के साथ कनेक्ट करती हैं, क्योंकि जब तक आप उन लोगों के साथ बैठेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलना है कि प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या है। कभी कभी आप उनके साथ बीच में बैठे होते हैं और आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, लेकिन बात है कम्युनिकेशन गैप की। हमने जो एक बैरियर्स लगा लिए हैं तो वो जब तक क्रॉस नहीं करेंगे हम लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें बैठना है, इतने बड़े सारे लोग बैठे हुए हैं, तो बीइंग अ पॉलिसी मेकर मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग अगर कोई ऐसी चीज ला रहे हैं तो ओन दैट डॉक्यूमेंट, और हम उसको लेके आगे जाएंगे और होप कि उसको हम इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे, लेकिन लोगों की अवेयरनेस के साथ। जब तक हम लोगों को पहले ऑन बोर्ड नहीं करेंगे कि हम क्या करने लगे हैं, लोग हमारे साथ कभी भी खड़े नहीं होंगे। क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने ये बात की थी कि सिंध गवर्नमेंट ने थर्ड में 700 RO प्लांट्स लगाए, लेकिन वहां पे कम्युनिटी ने जो क्योंकि वहां सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, दूसरी कम्युनिटीज भी हैं, तो उन्होंने, उनके स्कॉलर्स ने उनको कहा कि जी ये आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए प्लांट्स लगाए गए हैं, अगर आप इनमें से पानी पिएंगे तो आपकी जो फैमिली प्लानिंग है वो हो जाएगी। तो लोगों ने वो वहां उसको यूटिलाइज ही नहीं किया, वो फेल कर दिया, सिर्फ सोच की वजह से कि हमारी फैमिली प्लानिंग के लिए प्लांट्स लगाए गए। तो देखिए, ये जब तक हम चीजें सही नहीं करेंगे हम ठीक नहीं हो सकते। मेन प्रॉब्लम इज आवर मेंटल हेल्थ एंड मेंटलिटी। तो हम जब तक अवेयरनेस नहीं क्रिएट करते हैं, वी डोंट डू एनीथिंग। थैंक यू सो मच। बस अभी क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, उनके रिमार्क्स लेंगे। तो डॉक्टर मेहता, जो आपने सुना, सबने हमारे सारे पैनलिस्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए। कुछ उनकी एक्सप्लेनेशन में या उसके एडिशन में आप किससे आप स्पेशल रिमार्क्स लेना चाहेंगे? Thank you very much. First of all, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का, एंड I've learned so much since in the last 1.5 hour because मैंने एक्टिव अपनी जॉब जो है एज अ पीडियाट्रिशियन छोड़ी है जब से पॉलिटिक्स में आई 2010 से, तो लाइक यू नो इतनी चीजें रिन्यू है।
میری ایج کا یہ ہے کہ میں اپنے ایکسپیرینس سے بتاؤں گی, not from تو ایکسپیرینس میں 2-3 باتیں کروں گی. نیشنل آپ نے جو 3 بہت وہ بتائے کہ اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا اور ڈاکٹر صفدر نے بھی بتائے. نیشنل ہیلتھ سروس, میں mid-70s میں انگلینڈ میں تھی, نیشنل ہیلتھ سروس تھا اور میں ایز اے ہاؤس جاب پر کرنے گئی. ایک میں نے لمبر پنکچر کرنا تھا, لمبر پنکچر کے لیے پوری ٹرالی آئی اور ٹرالی میں اتنا سامان رکھا, نرس گاؤن پہنے ہوئے, مجھے گاؤن پہنا دیا. ہم جب پاکستان میں لمبر پنکچر کرنے جاتے تھے تو ایک اس پہ بوائل کرتے تھے, میرے پرانے اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں, وہ ایل پی کو بوائل کر دیتے, ایل پی نیڈل لے کے اور بچے کے کمر میں ڈال دیتے تھے, یہ ایل پی ہوتا تھا. آئی واز ریئلی اسٹانش کہ خدایا یہ تو جیسے آپریشن ہے, یہ گاؤن پہن کے آئی ہے, نرس بھی مجھے گاؤن پہنا دیا. اتنی بڑی ٹرالی تھی. اچھا اس ٹرالی میں ایل پی نیڈلز, اس ٹرالی میں یو نیم اٹ واز دیئر. اینڈ جب ایل پی ہو گیا وہ سارا پھینک دیا, سارا ڈسٹرائے, کتنے سرنجز کے. اس طرح ٹائم گزرتا کیا. اور وہ honest to God میں اتنی ینگ تھی, مے بی آف یور ایج اور مے بی ایون آئی ڈونٹ نو کہ اتنی ایج کی تھی, کیونکہ ہاؤس جاب بس میڈیکل کر کے تو ہاؤس جاب کر کے وہاں گئی تھی. میں اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ نہیں چل سکتا. اس لیے نہیں چل سکتا کہ میں نے وہاں پہ جو ویسٹ دیکھا, زیادہ تر میڈیسن کا تو اتنا وہ تو نرس دیتی تھی, لیکن یہ جو پروسیجرز کرتے تھے اور اس میں ہم کتنے ضائع کر دیتے تھے. اگر زیادہ زیادہ نو forget about doc, forget about this, نئی ٹرالی آ جاتی تھی. اسی طرح اگر ہم وہ کیتھیڈر ڈالتے تھے وہ ٹرالی آ جاتی تھی. تو NHS اب آج کل فیل ہوا ہے, بہت اچھا سسٹم ہے لیکن فیل ہوا, نہیں چل سکتا کسی ملک میں. اسی طرح انڈس ہاسپٹل کراچی والا ہے, میرے ٹاک میں فلو نہیں ہوگی, میں ادھر سے ادھر جاؤں گی, لیکن آپ میرے ساتھ کوشش کریں کہ رہیں. انڈس ہاسپٹل کراچی کا بہت ہی اچھا ہاسپٹل, ٹوٹل فری ہے. میں جب وہ کے پی میں تھی, آئی واز دین دا سوشل ویلفیئر منسٹر, ڈپٹی اسپیکر تھی, کہ ہمارے کیبنٹ میں آیا کہ انڈس ہاسپٹل یہاں کے پی میں بنانا چاہتے ہیں. پرویز خٹک صاحب ہمارے چیف منسٹر تھے, انہوں نے کہا کہ میں فار اٹ. میں نے کہا خٹک صاحب ایوری تھنگ ول بی فری. انہوں نے کہا میں اتنی زمین دیتا ہوں, ایوری تھنگ. میں نے کہا خٹک صاحب میں آپ کو ایکسپیرینس ہے, ہر ایک چیز فری نہیں ہو سکتی, دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں نہیں چلا سکتے. خٹک صاحب غصے کہ ہو ڈاکٹر مہتا یو ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو فری ٹریٹمنٹ. میں نے کہا میں فری ٹریٹمنٹ اینی وے, میں ڈسکشن کی بات کرتی ہوں. آئی ڈونٹ نو ہاؤ کہتے ہیں کہ انڈس ہاسپٹل ٹھیک چل رہا ہے, لیکن ہمارے کیبنٹ میں انفارچونیٹ تھا کہ بہتوں نے انکار کیا, تو انڈس کے پی میں نہیں آیا. وش کے میں آبجیکٹ نہ کرتے آتا, کیونکہ اب آج میں سن رہی ہوں کہ انڈس ٹوٹل فری دے رہا ہے. اب ٹوٹل فری کیسے دے رہا ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ ڈونیشنز کتنی جاتی ہیں, بٹ دیٹ از اے میریکل اگر وہ کر رہے ہیں تو اچھا. پھر یہ ہے کنٹریبیوٹیو والا, آپ نے کہا نیشنل ہیلتھ انشورنس کا, یہ جو ہمارا آیا ہے ہیلتھ کارڈ, آئی ایم سوری ہم پولیٹیکل وہ پلیز نہ مائنڈ کریں, کیونکہ میں نے بھی اپنا کلیئر ناٹ بیکاز پارٹی لحاظ سے, لیکن جو غلط بات ہے اس کو میں, ہمارا جو ہیلتھ سہولت کارڈ آیا تھا وہ بالکل بے نظیر والا جو ہے وہ الگ ہے. ہمارا ہیلتھ سہولت کارڈ آیا تھا 10 لاکھ. آئی ایم نو ڈاکٹر صاحب نے کہا مے بی کہ وہ بھی سسٹین نہیں کر سکتا تھا پروبلی فار لانگ ٹائم, لیکن وہ 10 لاکھ صرف ایک ہر ایک کو. خان صاحب کو میں نے ڈائریکٹ بھی کہا تھا کہ خان صاحب ہر ایک کو نہ دے, لائک وائی میرتھا شوڈ بی گیٹنگ 10 lakhs, وائی ایوری بڈی یہ اس طرح کریں غریبوں کا. تو ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے کہ سسٹینیبل شاید نہ ہوتا آگے, پھر خان صاحب شاید اس کو چینج کر لیتے, لیکن وہ بے نظیر والا نہیں تھا. وہ 10 لاکھ ایچ اینڈ ایوری پرسن آف کے پی کو تھا, ایچ اینڈ ایوری پرسن. تو اس میں یہ تھا کہ اس میں سرجری بھی تھی, صرف او پی ڈی کا نہیں تھا. او پی ڈی میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارٹ آف مس یوز جو ہوتا ہے سارا, تو ایڈمیٹڈ پیشنٹ, اس میں ہم نے پرائیویٹ ہاسپٹل میں کارڈیک سرجری میں اپنے غریب گاؤں کے لوگوں کو میں نے بھیجا, سرجری کرائی. اس میں یہ ہوتا کہ میرا ہسبینڈ جب ایڈمٹ ہوا تو انہوں نے کہا, اور بائی دا وے وہ اس طرح نہیں ہے, وہ بھی ہم CNIC سے ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں. میں نے کہا دیکھو میرا ہسبینڈ افورڈ کر سکتا ہے, کہتے نہیں بس اب ہے تو CNIC کارڈ دے دیا ہسبینڈ کا.
everything was through. नहीं होना चाहिए था ये प्रोग्राम, लेकिन anyway मैं एक्सप्लेन करना चाहती कि that is totally different than बेनज़ीर प्रोग्राम जो कि हुआ था. इसके बाद जो है तो डॉक्टर साहब ने जो हेल्थ रेगुलेटरी का कहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मैं एक पॉइंट से एग्री उनका करती हूँ, सॉरी आई विल डिसएग्री विद यू अगेन, कि ये जो है पब्लिक, देखिए पब्लिक हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात जो की वो ये की कि we are the providers, we are the inspectors, we are the administrators, we are everything. How come you can be everything in a public sector hospital? कभी भी नहीं होना चाहिए. पब्लिक हॉस्पिटल की फेलियर की वजह सबसे बड़ी ये है कि उसमें थर्ड पार्टी होना चाहिए, थर्ड पार्टी को एडमिनिस्ट्रेशन. तो आप हेल्थ डॉक्टर साहब आप हेल्थ रेगुलेटरी को क्या प्लीज, जहां मुझसे जरूरत है, बिकॉज वी हैव टू हैव पब्लिक में कि उसका एडमिनिस्ट्रेटर बाहर क्या हो, थर्ड पार्टी, बिल्कुल हॉस्पिटल से उनका कोई ताल्लुक ना हो, एडमिनिस्ट्रेटर भी ये जो है बाकी सर्विसेज भी जो है तो ये बाहर से आए, क्योंकि वो इतने एफिलिएशन होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर पे कोई केस में, मेरा डॉक्टर है, मेरा दिल में होगा सिंपैथी होगी, मैं उसकी साइड लूंगी. अगर उसने कोई गलत काम भी किया मैं कहूंगी ना यार इसको छोड़ो. टोटल बाहर से लोग आए कि उसमें वो ना हो, तो आई एम श्योर पब्लिक सेक्टर जो है इम्प्रूव कर सकता है. पब्लिक सेक्टर कभी भी प्राइवेट से कभी कंपेयर कर ही नहीं सकता पब्लिक. डॉक्टर साहब नंबर 2 बात ये है कि पब्लिक में आपने, मैं खैबर टीचिंग के पास 10,000 पेशेंट्स पर डे खैबर टीचिंग, आई डोंट नो पेज में कितने थाउजेंड आते हैं, 10,000, अच्छा 10 और 15,000 आते हैं. ये पब्लिक कैसे एक डॉक्टर खुदा के बंदो कर सकते हैं, कैसे पब्लिक और प्राइवेट को मेक कर. पर प्राइवेट में नंबर होते हैं. वो डॉक्टर, जैसे मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी थी, जब मैं प्राइवेट क्लिनिक जाती थी मैं कहती थी भाई मैंने 20 से ज्यादा नहीं देने, प्राइवेट पेशेंट 20 नंबर दे दो. मुझे पता था कि मैंने एक एक पेशेंट को इतना इतना टाइम. तो कैसे पब्लिक एंड प्राइवेट नहीं हो सकता जब तक हम उसका वो जो बर्डन है उस पर वो कम ना करें. तो बातें और भी बहुत हैं. आई थिंक कि या बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डॉक्टर साहब ने बात की, प्राइमरी हेल्थ केयर. Being a pediatrician, I tell you, unless and until we जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर को इम्प्रूव करें, चाहे मैं रही हूँ 50 साल लड़ती रही हूँ, इसी जो आप लड़ रहे हैं आज मैं लड़ती रही हूँ, नहीं होता कुछ भी. Unless and until we improve the primary health care, only then we can go up to the. हमारी वैक्सीनेशन रेट आज देखें, मैंने कल सेनेट में कहा कि खुदा के बंदो, पोलियो जो था तो नाइजीरिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान रह गए थे ना, 3 मुल्क, नाइजीरिया ने खत्म कर दी. यू नो अफगानिस्तान में लास्ट ईयर कितने केसेस थे, ओनली 2, पाकिस्तान में 20. ये देखें, लड़ाई 40 साल अफगानिस्तान में हुई है, पाकिस्तान में नहीं हुई. क्यों उन्होंने कंट्रोल कर लिया? उनके केसेस 2 हैं और पोलियो के हमारे ये हैं. तो ये बात ये है कि अनलेस उन्होंने अपने प्राइमरी हेल्थ पे, ठीक है तालिबान से पहले शायद डोनर्स, आई डोंट नो क्या उन्होंने किया, लेकिन आज रिकॉर्ड निकाल के देखें, कभी नहीं हो सकता जब तक हमने प्राइमरी हेल्थ केयर को नहीं. अगर आप पब्लिक प्राइवेट करना चाहते भी हैं तो माय पीस ऑफ एडवाइस विल बी नॉट ओनली द बिगर हॉस्पिटल, even in the smaller and BHUs and RAC level पर भी पब्लिक प्राइवेट करे. कम से कम आपकी ये वैक्सीनेशन और ये चीजें तो होना. प्राइमरी हेल्थ केयर, एक मदर अच्छा मैटरनल मोर्टेलिटी टॉप ऑफ द वर्ल्ड है. कितने परसेंट है आप गायनेकोलॉजिस्ट, आपको कितने परसेंट? ये देखिए हमारी मैटरनल न्यूनेटल मोर्टेलिटी इज स्काई हाई. ये प्राइमरी हेल्थ केयर में एक मदर जाती है, प्रेग्नेंट जाती है, उसका सिर्फ बीपी चेक करके उसको बता, उसका शुगर चेक करके उसको बता, ये 2 सिंपल चीजें उसको आप बचा सकती हैं. तो मेरा कहने को बहुत है, टाइम कम है, अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर मैं बता दूंगी, लेकिन ये जो है 2-3 चीजें मैं बताना चाहती थी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मैम. फ्लोर ओपन करते हैं. सबसे पहले डॉक्टर नजीर साहब कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर नजीर जी 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 फिर उसके बाद डॉक्टर ऐड करना चाहता हूँ डॉक्टर शाजिया के उसमें कि माशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट जो काम हो रहा है, SIUT में हो रहा है या एंडस में हो रहा हो, और आप बोल गए JPMC की, वहाँ भी हालत ये है कि पेट स्कैन जो है बहरहाल इस्लामाबाद में कहीं नहीं होता. पेट स्कैन इस्लामाबाद कहीं भी इतना एक्सपेंसिव है और JPMC फ्री है. Sorry, I didn't get that.
थैंक यू। पेट स्कैन जो है वो मैं यही सॉरी मैं भूल गई, आपने याद दिला दिया। JPMC साइबर नाइफ, एवरीथिंग जो भी आपकी हो रही है। आप सोचिए कि जब मैंने JPMC के रेडियोलॉजी यूनिट का विजिट किया था तो आप सोचेंगे उस टाइम पे लास्ट नंबर जो था वो 10 बजे हम लोग गए थे और 1200 नंबर्स जो हैं उस वक्त तक स्लिप्स बन चुकी हुई थी। तो आप देखें कि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जा रही है। अब ये सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ सिंध गवर्नमेंट की है, वहां पे भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ ही चल रही हैं सारी चीजें। लेकिन ये है कि आपने उसको मेंटेन कैसे किया है, मैनेज कैसे कर रहे हैं। इस चीज पे मैं शी सीनियर, लेकिन मैं डिसएग्री नहीं करूंगी। मैं इस चीज पे बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर थर्ड पर्सन होगा तो वो शायद सही उस चीज को मैनेज कर सके। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो आपके ग्रास रूट का बंदा होगा वही अगर आपके एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है तो दे नो योर प्रॉब्लम्स। क्योंकि बाहर से अगर कोई आएगा ना तो वो तो एडमिनिस्ट्रेशन चला लेंगे लेकिन आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में आपका ही एक ऐसा बंदा जो हर चीज को समझता हो, मैनेज कर सकता हो, वो गुड एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है। यही चीजें हैं कि हम इन चीजों को जब तक मैनेज नहीं कर सकते हैं, जब तक हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सही नहीं कर सकते। तो हम दोनों चीजों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आप देखें कि NICBD का मैंने आपको बताया कि उसमें ठीक है मॉर्निंग में रश होता है, लेकिन वहां पे इवनिंग क्लिनिक्स भी होती हैं, वही डॉक्टर इवनिंग में बैठते हैं लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस चार्ज नहीं होती है। तो ये चीजें अब सर ने बात की MTI की, तो MTI में क्या होता था कि वही डॉक्टर्स पिम्स हॉस्पिटल में बैठ के फीस चार्ज करते थे। तो ये चीज आई थिंक कि वही गरीब पेशेंट जो एक पैनाडोल लेने के जिसके पास पैसे ना हो, वो इवनिंग में अगर वहां पहुंचता है टाइम ओवर होने के बाद क्लिनिक में अगर पहुंच रहा है तो उसकी स्लिप बन रही है पैसों के साथ। है पब्लिक हॉस्पिटल, पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल, लेकिन फीस पे कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट फेयर। अगर पब्लिक सेक्टर है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखें। और हमने यही 2 यूनिट्स जो अभी पॉलीक्लिनिक एंड ट्रिम्स में बनाए हैं, स्क्रीनिंग सेंटर्स स्पेशली फॉर वुमेन, क्योंकि हमारे ब्रेस्ट कैंसर के रेशोज बहुत बढ़ते जा रहे हैं और उसमें हमने इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये हमने अवेयरनेस प्रोग्राम दिया था कि आप आए और आकर अपना मंथली 6 मंथली ईयरली अपना चेकअप जरूर करवाएं। और दूसरी बात पोलियो की बात की तो मैं पूरे सर्वे हुआ था 2018 एंड 2019 में, तो सखर में एक केस निकला था पोलियो का, एक डायग्नोज हुआ था वहां पे। जब उनकी पूरी हिस्ट्री का पता किया गया तो दे आर माइग्रेटेड फ्रॉम मर्दान, एंड मर्दान में भी वो अफगानिस्तान से माइग्रेट होके आए थे। तो देखिए जो, और उन्होंने पोलियो पिलाने से इनकार कर दिया था, ड्रॉप्स पिलाने। अब देखिए वो चीज अगर हम ये वो रजिस्टर्ड कहाँ हुए, पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान का केस लगा ना। तो ये चीजें हैं कि जब हम उस चीज को कंट्रोल करेंगे तो हमें अपनी बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज जो है उनको स्ट्रॉन्ग करना होगा, उनके लिए पॉलिसी लानी होगी, जैसे कोविड में किया हमने। इसी तरह से ही हमें स्ट्रिक्ट डिसीजंस जो है वो पोलियो के लिए भी लेने होंगे। अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी जो है उसको सही करना होगा। असल में कंटिन्यू करता हुआ कि आप देखिए उस पर एक POB प्रिवेंटिव ऑफ ब्लाइंडनेस जो आंखों का अस्पताल है, LRBT POB में हालत यह है कि सुबह 6 बजे 9 बजे खुलता है, 5 o'clock 6 बजे या 6 बजे नंबर नहीं मिलता, उसके बाद सुबह 6 बजे बाद नंबर नहीं मिलता, लेकिन वो कंट्रोल किया है, नॉट मोर देन 100। अब ये बात है कि कंट्रोल होना चाहिए, यू शुड कंट्रोल पेशेंट। 100 पेशेंट आया लेकिन 9 बजे खुलता है, लेकिन 6 बजे के बाद नंबर नहीं मिलता। I think this is because of our large population, which needs to be addressed in that way. I think it's like the public-private partnership is the future. I think in Pakistan, and points well taken from Madam Shazia. Obviously, at the same time, we have to strengthen our public sector, because without public sector, we cannot survive, as we are we are poor country, low middle income country. So that is important.
So I think I would like to ask Dr. Quaid Saeed about the regulations, how it is done, like is it the voluntary registration of the clinics and the hospitals, or is it compulsory? Because when I read this law act, which it was showing that it is voluntary, and how the clinics, small clinics in the city are responding to that, and what is about the quality of those clinics, small clinics and the small hospitals, mid-level hospitals. And because is there any survey or is there any evaluation on the quality? As Dr. Tabinda has said, it is only the perceived surveys, perceived quality of care. But did we do any clinical audits or the quality of objective quality of care assessments? Thank you very much. Thank you very much. मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा रिपीट ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि जो हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, दे कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. तो इधर इस्लामाबाद में जो अथॉरिटी थी वो नेशनल असेंबली की जो एक्ट था उसके थ्रू 2018 के थ्रू आया, और प्रोविंसेस में हर प्रोविंशियल असेंबली ने एक एक्ट पास किया जिसके तहत ये हेल्थ केयर कमीशंस एग्जिस्टेंस में आए. अब ये मैंडेट होता है कि जितनी भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हों, चाहे वो हेल्थ केयर क्लिनिक है, फैमिली फिजिशियन है, लेबोरेटरीज हैं, छोटे हॉस्पिटल्स हैं, दे ऑल हैव टू रजिस्टर with their respective healthcare commissions authority, and this is not voluntary, this is mandatory. They have to register. So actually the government wants to know कि कितने healthcare providers हैं, वो कहाँ बैठे हुए हैं, किस किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं, और फिर उसकी क्वालिटी को आप किसी तरीके से इम्प्रूव करें. और मैंने आपको बताया कि क्वालिटी इम्प्रूव करने का जो मैकेनिज्म है वो है हमारे स्टैंडर्ड्स. तो इनको सारे प्रोविंसेस ने भी और हमने भी मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स बना दिए. And this is available everywhere on our websites. हमारी वेबसाइट पे भी और प्रोविंसेस की वेबसाइट्स की, कमीशंस की वेबसाइट्स पे अवेलेबल. So anybody can go and see कि मेरा जो क्लिनिक है, जैसे आप बात कर रही हैं कि अगर फैमिली फिजिशियन है, उस क्लिनिक के लिए जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, मिनिमम सर्विस डिलीवरी. और फिर इसी तरह अगर छोटा हॉस्पिटल तो क्या है, लेबोरेटरी के लिए क्या है, डेंटल क्लिनिक के लिए क्या है, तो वो स्टैंडर्ड्स हमने बना लिए. अब उसका अगला स्टेप है कि हम इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर उनको जाके असेस करना चाहते हैं कि क्या और ये मिनिमम है, दिस इज नॉट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जिसकी हम बात करें. बेस्ड ऑन दीज मिनिमम स्टैंडर्ड्स डू दीज फैसिलिटीज फॉल ऑन देम. तो इस तरह क्वालिटी को हम, लेकिन जो आपका अगला सवाल है कि क्वालिटी ऑफ केयर के ऊपर क्या कोई हमने एक्सटेंसिव सर्वे किया, नो वी हैवंट, वी डोंट नो एग्जैक्टली. उसकी बड़ी वजह ये है कि कमीशंस जो हैं सिवाय पंजाब के, दे आर इन इन्फेंसी. जैसे हम तो 1.5 साल पहले आए हैं, इसी तरह केपी के जो है उसको भी 2-3 साल ही हुए हैं, सिंध भी, लेकिन ओल्डेस्ट जो है पंजाब है. तो दे हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट. पंजाब वालों ने सबसे ज्यादा काम किया और उनको 15 साल से ज्यादा हो गए हैं फील्ड में काम करते हुए. तो उन्होंने स्टैंडर्ड्स भी बनाए, उन्होंने ट्रेनिंग भी कराई, उन्होंने लाइसेंसेस भी इशू कर दिए हैं. अब उनको फर्दर इम्प्रूव करें, लेकिन इन जगहों पर मॉडल जो है वो क्वालिटी ऑफ केयर को सिर्फ मिनिमम स्टैंडर्ड्स के ऊपर असेस कर रहा है. इस्लामाबाद में हम एक नया मॉडल लेकर आ रहे हैं, एंड दिस इज समथिंग न्यू. वी वांट टू डू 2 थिंग्स. नंबर 1, हमने इस स्टैंडर्ड्स में स्टार रेटिंग डाली है. हम स्टार रेट करना चाहते हैं यहाँ इस्लामाबाद के हॉस्पिटल को 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार. 3 स्टार से नीचे नहीं है. ये इसलिए कर रहे हैं कि एक तो हर इंसान, अवाम को भी, और चाहे वो बाहर बैठा है या पाकिस्तान बैठा है, दे शुड अंडरस्टैंड कि हॉस्पिटल किस लेवल की क्वालिटी देगा. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा एक और मैंडेट भी है, वो है इनकी प्राइसेस को सिलेक्ट करना कि ओवर चार्ज ना करें. जैसे आपने बताया कि ओवर चार्जिंग है, यस, आपने बताया ओवर चार्जिंग, यस, दिस इज द केस. तो हम कैसे कंपेयर करेंगे एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल, चाहे वो JCI अप्रूव्ड है, या एक नॉर्मल हॉस्पिटल के दरमियान में प्राइसिंग को कैसे सेट करेंगे? इसको सेट करने के लिए जो हम मैकेनिज्म लेकर आना चाहते हैं वो स्टार रेटिंग है, कि वो स्टार रेटिंग के ऊपर डिपेंडेंट होगा और उसी के ऊपर चार्ज करेगा. मैं आपको मिसाल दूं, लेट्स सपोज कि एक 5 स्टार रेटेड हॉस्पिटल जो है, अगर वहां पेंडिसेक्टमी के लिए कोई पेशेंट आएगा एंड लेट्स सपोज कि वो $100 चार्ज करेगा, तो 4 स्टार कैन नॉट चार्ज $100, दे हैव टू बी 80. और 3 स्टार जो होगा वो $60 चार्ज करेगा.
this will create a good competition for resources. कि वो 3 star वाला 4 star में जाना जाएगा, 4 star वाला 5 star में जाना जाएगा, अपने resources increase करने के लिए, because they are there for profit. Private sector तो profit के लिए बैठा हुआ है. तो ये वो healthy competition भी हम create करना चाहते हैं. दूसरी बात ये कि हम ये भी चाह रहे हैं कि medical tourism पाकिस्तान में क्यों ना हो, अगर इंडिया में और दुबई में इतना ज्यादा है और हमारे पास पेशेंट्स अफगानिस्तान के मैक्सिमम पेशेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स और बाकी कंट्रीज के भी लोगों को भी पाकिस्तान नजर आता है, जहां प्रॉब्लली उनको एक अच्छी ट्रीटमेंट मिल सकती है, लेकिन दे डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स वी हैव, हमारी क्वालिटी ऑफ केयर क्या है. सो वी वांट टू प्रमोट आवर मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटीज सो दैट दे शुड नो किस किस्म की क्वालिटी होगी और जब मैं जाऊंगा तो मुझे पैसे कितने लगेंगे, what should be the cost. तो ये नया मॉडल भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो अल्टीमेटली अगर इम्प्लीमेंट हुआ तो एक चेंज लेकर आएगा इन द क्वालिटी ऑफ केयर फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, इवन इन द पब्लिक सेक्टर, क्योंकि हमने दोनों को इसी लेवल पर लेकर आना है, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो. टाइम हमारे पास कम है, क्विकली डॉक्टर आरिफ के कमेंट्स लेते हैं, फिर सर के पास जाते हैं. मैंने सिर्फ एक जो भूल गई मैं नर्सेस का, कि हमारे कंट्री में नर्सेस का पिरामिड जो होते हैं ना, कि बेस ये नर्सेस होती है और टिप होता है डॉक्टर्स का. हमारा यहाँ पे ये है कि जो रिवर्स है, ये पिरामिड रिवर्स है, डॉक्टर्स इतने हैं और नर्सेस इतने. तो प्लीज जब आप पब्लिक प्राइवेट उसमें जाएं तो सबसे पहले ये नर्सेस का ये वो करवाएं. थैंक यू. Just, 2-3 points. I didn't answer your questions about MTI, so I'm just sorry about that. Look, my, criticism of MTI was basically that you are creating two-tier system in hospitals. जिसकी डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि एक ही जगह आप जो डॉक्टर गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि वो उसको शाम को प्रैक्टिस करें और वही एक ये. अच्छा, दूसरा MTI का the second problem was that again you are creating just two-tier systems in which you are saying that one is affording class, one is non-affording class. Ideally, a public sector like hospital should have access to all. And there should be no discrimination at the point of it. So in a system, you are encouraging, privatization by stealth. And I think this has to be taken. Third criticism around that issue was, in Grand Health Alliance, the young doctors. Obviously, working conditions, they had, absolutely a lot of issues with that. That was my just. It may have worked well. I haven't looked at it, lately. This is a bit dated. I want to encourage export of Pakistani medicines. This should not be the work of a regulatory authority. You take your eyes off your main, function, which is you should enforce, strict, regulatory regime. And which we know it's not happening. In relation to, pharmaceutical agency. So what I'm saying is that I hope Islamabad, regulatory authority will take this into account. About, state and others, I think this point was made that कोई हम में से state hospitals नहीं जाना चाहता. State hospital is still a good, hospital. इन्होंने भी example दी Dr. Shazia ने. And if you know someone, over there you get a good treatment. And I tell you, one of our friend ex parliamentarian, उनका फ्रैक्चर हो गया और वो पोली क्लिनिक चले गए. उनको ऐसी केयर मिली, मैंने कहा आप तो प्राइवेट में भी जा सकते हो. तो उन्होंने कहा यार ये सबसे अच्छी केयर है, बिकॉज आई एम
the parliamentarian, ये सारा hospital रहा है तो others. So I think this is enough. Yeah, sorry. I think Dr. Saab ਤੁਸੀਂ reference ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. I think it's not. No. It's not for public. No. What I'm saying. मुझे एक सेकंड फिर देंगे. थोड़ा सीक्वेंस ये MPI का मैं इसके रिस्पॉन्ड करूंगी क्या वो जबान की पॉलिसी में पॉलिसी में मैं तो वैसे I have two quick points and one question. The health workforce that you are talking about, that कि हमें public को aware करना चाहिए. I will also talk about another way around. जो हमारे health workforce है, even the burden is more and the health workforce is less. लेकिन उनके behavior में भी मैं doctors की बात नहीं कर रहा हूँ. जो इवन स्टाफ है हेल्थ वर्कफोर्स का, उनके बिहेवियर में भी चेंज लाना चाहिए कि मैं अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक दफा जाऊं तो इतने धक्के मुझे खाने पड़ते हैं कि मैं दोबारा जाने की हिम्मत नहीं करता. सो द फर्स्ट थिंग इज दिस कि हम इन दोनों की कोरिलेशन में कोई चीज कर लें. द सेकंड थिंग, सर ने बात की कि हमें टूरिज्म और न्यू आइडियाज की तरफ जाना चाहिए इस फील्ड में. सो द न्यू आइडिया, वन ऑफ द न्यू आइडिया, मैं डॉक्टर जुल्फिकार भुट्टा साहब के साथ टोरंटो यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ. That is the climate resilient health system. इसमें फंड्स बहुत अवेलेबल हैं. इंटरनेशनली पाकिस्तान ने इस चीज़ को कमिट किया हुआ है. We should work on it, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए. मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मोटिवेट करें स्टूडेंट्स को. HSA से मैं कुछ स्टूडेंट्स को इसमें सुपरवाइज कर रहा हूँ. द मेन प्रॉब्लम है कि इस फील्ड में हमारे पास हेल्थ वर्कफोर्स की एजुकेशन नहीं है. So the climate resilient health system will automatically improve our health system. क्योंकि जब आप उसको क्लाइमेट रिजिलियंट करते हैं तो आपकी बाकी चीजें जो है ना वो खुद रिजिलियंट हो जाती हैं. तो दैट इज द हेल्थ रिजिलियंट सिस्टम. आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसा मैडम ने कहा है कि वी वर गिविंग द सजेशन दैट इंडस हॉस्पिटल इज नॉट पॉसिबल इन केपी, और आपने क्लेम किया है कि इन सिंध वी आर वेरी सक्सेसफुल. तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का वो कौन सा मॉडल है जिसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? क्योंकि सबने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की लेकिन वो मॉडल एक्सपोज नहीं किया जिसके थ्रू आप इतने सक्सेसफुल हैं. तो अगर इस चीज को हम एक्सपोज करें और फिर उस पे हम सजेशन दे दें और उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करें तो देन इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल पाकिस्तान. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं फिर इकट्ठे रिस्पॉन्स. मैं डॉक्टर शाजिया साहब से क्वेश्चन है. डॉक्टर शबीर मेरा नाम है. मैं हेल्थ सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज कॉन्सेप्ट. आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी सिंध के मेडिकल सिस्टम में जो इस तरह का हो रहा है. वो पीपल्स पार्टी की ये एक खुशकिस्मती है कि उसकी लेगेसी में एक इस्लामिक सोशलिज्म आ रहा था तो उसको इम्प्लीमेंट किया है. लेकिन ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, मतलब अगर वो जो सोशलिज्म है उसके तहत तो यानी एजुकेशन है, हेल्थ है, कम्युनिकेशन है, ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. और स्टेट ही बगैर किसी लालच के अपने लोगों को मतलब एक सैक्रिफिशियल एक फीलिंग के साथ कर सकते हैं. जब प्राइवेट एलिमेंट घुसता है तो प्राइवेट एलिमेंट इस वक्त पूरी वर्ल्ड जो है इस वक्त रिलीजन से दूर जा चुकी है. कोई इथिक्स नहीं, कोई वैल्यूज नहीं. तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसका काम, उसका सोल कंसर्न एक्विजिटिवनेस जो है, वो तकासुर है, अपना मैक्सिमाइज करना है. आपके सिंध में वाकया हुआ कि जाम शोरों से जंगली कुत्ते ट्रालियों में 500 रुपए फी कुत्ता, मेरे जर्नलिज्म से भी ताल्लुक रहा है तो ये सारी चीजें, जंगली कुत्ते ट्रालियों में भर के ले जाए गए, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में छोड़े गए ताकि वो काटे और रेबीज गिटे. रेबीज की जो वैक्सीन है, ये स्टोरीज है अंदर आपकी नजर से गुजरी है. लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो फार्मा हो, फार्मेसी हो या कोई भी हो, उसका सोल कंसर्न है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर. तो स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेनी चाहिए कि वो, यानी हमें पता है कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में हमने एजुकेशन हासिल की है तो हमारा टीचर्स के साथ एक मुर्शिद और मुरीद वाला ताल्लुक था. जब प्राइवेट सेक्टर में हम जाते हैं तो उधर शागिर्द समझता है कि मेरा टाइम बर्बाद कर रहा, मैंने पैसे दिए. कोई उनके दरमियान एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का ताल्लुक वो नहीं है जो स्टेट प्रोवाइड करता है. तो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान एक रिलेशनशिप क्रिएट. इसी तरह पब्लिक सेक्टर का जो डॉक्टर होगा उसको गवर्नमेंट पे कर रही होगी, उसका और पब्लिक के दरमियान एक मोहब्बत, एक बॉन्ड क्रिएट. मैंने तो ये देखा है कि कराची में, यानी डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी टर्म इस्तेमाल की कि हो सकता है आप जो है ना ओवर ट्रीट हो जाए. कराची में ये 10 लाख की वजह से कह रहे हैं, लेकिन कराची में 10 बीमारियां साथ उस वक्त निकाल के देते हैं
प्राइवेट सेक्टर में आपको एक बीमारी है वो 10-15 और निकाल के आपको 50-60 हजार के इधर उधर के टेस्ट और सब सेटिंग होती है इधर उधर कि आप जो है अल्ट्रासाउंड फलां लेबोरेटरी से करवाना है, उधर सारे कमीशन होते हैं। पहले मेहता साहब के पास चल रहा था, फिर डॉक्टर साहब। जी, मैं सिर्फ ये MTI का 1 मिनट के लिए MTI KP में किया था, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट। MTI हमने इसलिए किया कि जैसे पेशेंट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे 200 पेशेंट्स हैं, देख रहे हैं, हर एक कहेगा मैंने प्रोफेसर मेहताज को दिखाना है। अच्छा, उसमें से 50% ऐसे जो कि अफोर्ड कर सकते हैं और 50% ऐसे जो नहीं अफोर्ड सकते। MTI के बैक पे वो ये था कि भाई जो अफोर्ड कर सकते हैं द सेम डॉक्टर विल सिट इन द इवनिंग, एंड जो अफोर्ड कर सकते हैं वो उसको देखेगा और पुअर जो है सुबह जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, इसके बैक पे ये था कि हमारे यही डॉक्टर जाके मैल प्रैक्टिस, आई एम सॉरी, आई एम प्रोफेसर माई सेल्फ, प्रोफेसर जाके बाहर बैठ के मैल प्रैक्टिस करते थे। लेबोरेटरीज अपनी अपनी लेबोरेटरीज को भेजते थे। हमने कहा कि MTI जैसे खैबर टीचिंग हॉस्पिटल है, हमारी खैबर टीचिंग हॉस्पिटल के लेबोरेटरी काम आफ्टरनून में अस्पताल वीरान वो पड़े होते थे, तो हमने वही जगह इस्तेमाल की, वहीं पर डॉक्टर को बिठाया, वही थिएटर इस्तेमाल किए। जो थिएटर प्राइवेट जाके वो लेते थे तो फीसें भी कम हुई। और ये बहुत सिर्फ जो हमें फ्रिक्शन हुई, फ्रिक्शन इस पे नहीं हुई थी, फ्रिक्शन इस पे हुई थी कि जो पेंशन का हमारे टेक्निक तक के जो नए आएंगे वो टोटल MTI के होंगे, ये पुरानों का पेंशन का क्या क्या वो शुरू में जो हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स रनिंग वेरी स्मूथली, इट्स वेरी गुड। किसी कभी KP में आ जाए, आप मॉर्निंग में आ जाए, चाहे आप MTI आफ्टरनून में आ जाए, यू विल सी द डिफरेंस। एक तो ये मैं क्लियर कराना चाहती थी। बाय द वे जुल्फिकार भुट्टा मेरी ऑनर है कि मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है, मेरा ब्रिलियंट स्टूडेंट था माशाल्लाह। तो उसका आपने उसके लिहाज से कुछ क्वेश्चन किया था कि नहीं, उसका तो ये था कि हाँ, आपने कहा कि पॉलिसी वो उनके पास स्कॉलरशिप का आपने कहा फॉर स्टूडेंट्स है, आपने ये कहा for student health system, climate. अच्छा, ओ जॉब इन टोरंटो यूनिवर्सिटी, तो उनके साथ प्रोजेक्ट्स तो बहुत है, लेकिन एक प्रोजेक्ट जहाँ पे उन्होंने मुझे हायर किया, दैट इज इन टोरंटो यूनिवर्सिटी, दैट इज अ क्लाइमेट रिजिलियंट हेल्थ सिस्टम। जो क्लाइमेट रिजिलियंट हेल्थ सिस्टम पे पाकिस्तान में हमने एक स्टडी भी की है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाले भी इन्वॉल्व थे। तो इट वाज वेरी सक्सेसफुल स्टडी। और HSA में मैं कुछ स्टूडेंट्स को सुपरवाइज कर रहा हूँ हेल्थ सर्विस अकेडमी में, मैं उधर विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पे पढ़ा भी रहा हूँ। तो स्पेशली आई रिक्वेस्ट डॉक्टर साहब के जो उनके स्टूडेंट्स हैं और वो इस फील्ड से अनअवेयर है अभी तक कि क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट है हेल्थ पे, दैट इज सवेयर एंड द वर्ल्ड इज इन्वेस्टिंग ऑन इट। तो आप इसकी तरफ आ जाएं, और इसमें पैसा भी है, पाकिस्तान को भी डेवलपमेंट के लिहाज से आपके हेल्थ सिस्टम को भी डेवलप करेगा, और साथ में स्टूडेंट्स की भी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। तो आई ऑफर माय सर्विसेज जो टोरंटो यूनिवर्सिटी के साथ आप लोगों की जो कोलैबोरेशन है, और भुट्टा साहब का मैं स्टूडेंट हुआ कि वो स्टूडेंट से, सो इट्स अ गुड कपलिंग। थैंक यू। डॉक्टर शाहिद की क्विकली रिमार्क्स ले लेते हैं और बाकी हम चाय पे डिस्कशन करेंगे। मेरा सिर्फ एक था कि अभी जो मेडिकल टूरिज्म की बात हो रही थी, तो मैं आपको एक छोटे से ये बता देती हूँ कि एक कपल फ्रॉम कनाडा 7 वो लाल शहबाज कलंदर की तरफ विजिट करने गए थे, और वहां से वापस आते हुए हैदराबाद में ऑन हाईवे पेशेंट की तबीयत खराब हुई, उनको हार्ट अटैक हुआ। तो NICVD मोबाइल सर्विसेज जो हैं वो उन्होंने वहां पे जाके उनको रेस्क्यू किया, और उसके बाद NICVD सैटेलाइट हैदराबाद में उनको लाया गया और फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी ट्रीटमेंट हुई, क्योंकि उनके पास पाकिस्तानी रुपीस इतने नहीं थे। तो वो परेशान थे कि हम किस तरह से हमारी यहाँ पे ट्रीटमेंट होगी, ना तो हमारे पास कोई फैसिलिटी है, ना हेल्थ कार्ड है, कुछ भी नहीं है। तो उनकी सारी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हुई, और वो अभी तक इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि हमें नहीं पता था कि पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर में इस तरह की ट्रीटमेंट मिल सकती है। और सर आपने जो बात की, ये तो मेरे लिए एक नया इंकशाफ है। पहले तो मैंने सुना था कि इस्लामाबाद से और पंजाब से जो है चूहे वो KP भेजे जा रहे हैं और मच्छर भेजे जा रहे हैं, ये तो आपने पहली दफा मुझे बताया है। तो इंशाल्लाह इसको भी हम जरूर देखेंगे कि वो कुत्ते कहाँ से और कौन सी कंपनी है जो अपनी रेबीज की जो है वो करवाना चाहती है पब्लिसिटी। तो ऐसे न्यूज अगर आपके पास हैं तो जरूर शेयर किया करें, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो लोग रो रहे हैं कि कहीं पे भी वैक्सीन नहीं। सर मेरा आई एम फ्रॉम पनवा किल सखर, तो मैं
मंथली विजिट करती हूँ तो मेरे जो वैक्सीन सेंटर है वहाँ पे एंटी रेबीज भी हैं, एंटी स्नेक वेनम भी हैं, EPI की जितनी भी पोलियो वैक्सीन सारी वैक्सीन मैं अपग्रेड करके रखती हूँ. Thank you, ma'am. Thank you everyone for joining us today. बहुत fruitful discussion रही और इंशाल्लाह इस पे हम एक policy brief बना के आपके साथ share करेंगे. And we hope कि इस पे further हम काम भी कर सकें और किसी बेहतरी की तरफ जा सकें. Guest के लिए बाहर चीज़ सब लीजिए तो please आप. Thank you very much.